Okay. I've started the focus mode, so you can turn your cameras on. So, in the last lecture, we were seeing using hydrogen halide, right? Now, using hydrogen halide, we have seen some of the reactant. Chali, theek hai. Let's start with a few questions and then we will do the mechanism here. Please write. I'm sorry, guys. Did not realize that I got disconnected. Yeah. Can you see the screen, Krishna, Priya, and Safia? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Please do these three questions, and then we will start with the class. The mechanism mainly that we have to do. Take 3 minutes for these three questions. Send your answers once you are done writing.
सत्या, आप भी आंसर भेज दीजिए. आई गॉट द आंसर फ्रॉम कृष्णा प्रिया. Yes, very good, Krishna Priya, but I think you have to work on the drawing of the compounds, right? Yes, sir. Hmm. Satya ने भी भेज दिया. That is correct, very good. Yeah. Now, जब आपके पास peroxide होगा ना, or if you have any of the radical generators, then the major product will be different for unsymmetrical alkene. जैसे कि हम लोगों ने last time लिखा था, you saw that the doubly bonded carbon atom having lesser number of hydrogen will get the halogen atom, form the major product. And in the case of HI or HBr or anything else like that, for example, if you have something like this, plus HBr in the presence of peroxide. Peroxide क्या? Any of the helper. All of you guys remember what is helper? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, है ना? sir. So in the presence of helper, what is going to happen? This will be your major product. The Br will attach on the carbon atom which is having more number of hydrogen. Okay, so I'm writing a point. Same. The process is still the same. The main thing that you have to do in both the cases for the addition of HBr or HCl, something like that, is to count the number of hydrogen on the doubly bonded carbon atom. The difference is if helper is present, then the halogen atom will attach on that carbon which is having more number of hydrogen. And if helper is not present, that means in dark, what will happen? It will attach on the carbon which is having less number of hydrogen. So if I will copy the same thing, it will be much better for you guys to understand. Having more number of hydrogen atom will get the hydrogen atom and form major product. इसमें ऐसे कर सकते हैं. When helper is present, then the doubly bonded carbon atom having more number of hydrogen will get the halogen atom and form major product. Got this? Yes or no? Please tell me. Sophia and Krishna Priya. Yes, sir. ठीक है. Write this down. Raise your hand once you're done. Yes, sir. Yes, done. Krishna Priya is also done. ठीक है. Now, इसी दो cases जो हम लोगों ने पढ़े ना, in the presence of helper and in the absence of helper. So those two cases, they have condition. I mean, they are formed in a rule. जो रूल क्या है? एक तो है आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल और दी मार्कोनिकॉफ एडिशन. ठीक है, so please write मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, या फिर आप इसको रूल समझ लीजिए. ठीक है. Now, what the rule says, please write the rule. The rule says that when unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent,
treated with unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent attaches the carbon with less number of hydrogen. ठीक है, with less number of hydrogen. So this is the Markovnikov rule. अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ना. So what is the rule say when unsymmetrical alkene? So unsymmetrical alkene आपके पास क्या हो जाएगा? For example, propene. Simplest unsymmetrical alkene that you can have is propene. Unsymmetrical reagent का मतलब हुआ that you are having two different atoms. That means there is a positive end and a negative end. For example, we can have HBr. Right. Now, what is the negative part of this particular reagent? It is the one which is more electronegative element. So Br is more electronegative, so that is delta negative, and this is delta positive. So Br is the negative part, and hydrogen is the positive part. Now, what is the rule saying? When unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then the negative part, that means Br of the reagent, attaches to the carbon with less number of hydrogen. Less number of to the carbon with less number of hydrogen. ना यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 1, and यहाँ पे आपके पास 2. So it will attach on the carbon which is having one hydrogen. So Br will attach here. So this is the same thing that we have learned, and it is inside a rule. ठीक है? And why does this rule? Why this rule is present? और ये rule ऐसा क्यों है? इसके पीछे है mechanism. So what is the mechanism? Please see. I am going to take propene. Just look here. Don't write anything. Plus HBr. You can easily see that hydrogen is delta positive, that is, it is electron poor. It is having a partial positive charge, and you can also see that this pi bond is electron rich. So what will happen? This pi bond will attack onto the hydrogen atom. Now the pi bond is made up of two atoms. दो carbon से बनता है. That is why what will happen? Hydrogen can either get attached to this blue carbon atom, or it can get attached to this particular red carbon atom. ठीक है, तो दोनों केसेस में देख लेते हैं. What will happen if it attaches on the blue carbon atom? If the hydrogen attaches on the blue carbon atom, then this next carbon atom, it will get a positive charge. Similarly, if the hydrogen attaches on the red carbon atom, this carbon atom will get the positive charge. You can easily see that this is 1 degree carbocation, and this is 2 degree carbocation. Correct? Now, which is more stable, 1 degree or 2 degree carbocation? कौन सा ज्यादा stable है? Any idea, guys? What is more stable, 1 degree carbocation or 2 degree? Safia and Krishna Priya? Secondary. Safia, no idea? 1 degree, sir. नहीं मतलब you know it या फिर आप तुक्का लगा रहे हैं? I mean you are just guessing. I don't know actually. You don't know actually. ठीक है. देखिए for stability of carbocation याद कर लीजिएगा. Carbocation जो होता है सबसे ज्यादा stable benzyl, then you have allyl, then you have 3 degree, then you have 2 degree, and then you have 1 degree. ठीक है, मतलब allyl और 3 degree को almost equivalent मान लीजिए. 3 degree थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है. ठीक है, so 2 degree is more stable. ठीक है, this is more stable. Now if the 2 degree carbocation is more stable, then you will get this product, है ना? आपको ये intermediate ज्यादा form होगा. This will be formed in a larger quantity. That is why this will further do the reaction. Also, one more thing that you can see here, when the alkene is attacking on the hydrogen atom, the hydrogen cannot make two bonds, है ना? वो carbon वाले compound और Br के साथ bond नहीं बना सकता. That is why the hydrogen will break the bond with Br, and Br will get an electron. तो दोनों cases में आपको एक और चीज मिलेगा, that is Br negative. Here also you will get one more species, that is Br negative. Obviously, from this secondary carbon cation, the reaction will proceed, and the positive charge is here plus the Br negative. Now you can easily attack this carbon atom, leading to formation of a 2 degree alkyl halide. Okay, so this is the major
that you will be getting. I hope you understand the rule now. Yes or no? Please tell me. Sophia. Yes, sir. ठीक है. So please ये Markovnikov addition या Markovnikov rule लिखिए. Raise your hand once you're done writing. Both of you guys are done. मैकेनिज्म आएगा तो मैकेनिज्म लिख लेंगे ना आप लोग. ये सुनो, टेल मी. Yes, sir. अब दूसरे आपके पास एंटी Markovnikov rule, that is in the presence of peroxide. Sophia, you can lower your hand. Krishnapriya, you also. You guys can lower your hands. Then we have the anti Markovnikov. Addition or the anti Markovnikov rule. So what does the rule says? Please write this with me. Okay, write the rule with me. When unsymmetrical alkene is treated with HBr in the presence of peroxide or light, then Br attaches on the carbon with more number of hydrogens. ठीक है. तो उसी तरह अगर हम बात करें प्रोपीन की, then what will happen? The presence of HBr, Br will attach on the carbon with more number of hydrogen. So this will be your major product. और यहाँ पे this will be minor. अच्छा, light के presence में मान लीजिए you are having light here. This is minor. Okay. What is the mechanism here? Why does this happen now? Light के presence में ऐसा क्या हो जाता है? तो please see the mechanism. Okay. So in mechanism, first of all, we will take peroxide. अगर आप लीजिएगा ना, for example, peroxide. Wait a second. हम लोग लेते हैं एक example इस तरह का. Plus HBr in the presence of peroxide. Peroxide. Peroxide क्या होता है? Let us suppose we are taking benzene peroxide. So phenyl ring, oxygen, and then again the phenyl ring. That is the benzene ring. तो आपने यहाँ पर सेम चीज मेजर and minor. Now, what is the first step here? The peroxide, it gets broken very easily. So you have pH, oxygen, oxygen, and then phenyl. So these are made up of 1 electron each. Homolytic cleavage occurs and they break up like this. So you have pH that is bonded to oxygen free radical, and again there is one more molecule of the same species. And दोनों molecule क्या मिलेंगे? You will get two same species. In the next step, what is going to happen? This free radical
the phenyl or the phenoxide free radical PH, oxygen free radical, it attacks on the HBr. अब HBr में अटैक कैसे होता है? HBr is also made up of two electrons. So one of the electron comes from the oxygen atom like this, the another electron comes from the hydrogen atom like this, and it gives rise to phenol. PH, oxygen and hydrogen gets bonded, और एक Br को एक electron मिल जाएगा. So now we are having Br free radical. Now this Br free radical attacks on the alkene. That is the third step, which is the main step here. इसको ध्यान से देखिएगा. Plus Br free radical. तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है? This pi bond is going to attack. Pi bond is going to attack the Br. Now here also there are two carbon atoms. तो ये जो Br है किस पे अटैच होगा? Right, either it will get attached on the red carbon or it will get attached on the blue carbon. Red carbon के केस में अगर हम देखें, then if it attaches on the red carbon, तो free radical will be on the 1 degree carbon. If it attaches on the second carbon atom, Br attaches here like this, then the free radical that we are forming, it is a secondary free radical, है ना? यहाँ से आप बताइए, I think we have done this previously also, no? This is 1 degree free radical. This is 2 degree free radical. So both free radical and carbocation, they have the same ranking and the same stability orders. 2 degree, this is more stable. Now, अब 2 degree से जब reaction होगा, it is a fourth step. जब आपके पास इस तरह से, you have Br here, and there is a free radical, और आपका एक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है HBr के साथ फिर से. ठीक है, देखिए किस तरह से रिएक्शन होगा. This one free radical will attack, मतलब one free radical and this hydrogen free radical, both of this will combine together and make a bond. तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा Br, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, राइट? So, but we don't show hydrogen in the bonding structure. We are showing here just because एक reaction हो रहा है and there is a new bond formation. Similarly, if Br is on the secondary carbon like this will be your major, है ना? Because this is coming from a more stable carbocation. If I see this one, Br, और फिर यहाँ पे एक Br radical मिलेगा. I mean the reaction will keep on progressing, but आपको major product मिल गया है. Minor product भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या minor product है, क्या major product है. ठीक है. So please write this down. Raise your hand once you're done. Okay, just waiting for you now. Can you write some questions now? Right.
the major products for following. Satya, you can lower your hand by now. एच न्यू लिखिए, चाहिए आप यहाँ पे पेरोक्साइड लिख लीजिए. Send your answers once you're done writing. थोड़ा सा ना आप ध्यान से कीजिएगा, एक तरह का रिएक्शन नहीं, काफी अलग अलग किस्म के रिएक्शन है यहाँ पे. ओके, सेंड योर आंसर्स वंस यू आर डन. Anything Krishna Priya has sent. I'm waiting for Safia, your answer. And Krishna Priya, you did not give the assessment yesterday. Krishna Priya, Sorry, sir. yesterday
Yesterday you did not attend. You did not give the assessment. No, sir. Why? Sathya, please send your answers, whatever you have done. Yes, sir. Hmm. Yeah. Oh no, Sathya. सेकंड वाला आपका गलत नहीं होना चाहिए था। नहीं सत्या, आपने बहुत मिस्टेक कर दिया है। प्लीज थोड़ा फोकस करके करें। कैन आई हैव योर कैमरास ऑन बोथ ऑफ यू? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि आपने बेदिली से किया है। सत्या, सी, फर्स्ट वन तो आपने सही किया ना। मतलब कैसे, मतलब व्हाट इज योर प्रोसेस? व्हाट डू यू डू? पहली चीज जो आपको करनी है ना, यू ब्रेक द डबल बॉन्ड और इस फिगर को एज इट इज लिख दिया आपने। ओके, फाइन, ये सुनो सत्या। ठीक है, देन यू विल अटैच दी ब्रोमीन ऑन द कार्बन दैट इज हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो वो आपने किया। व्हाई मोर हाइड्रोजन? बिकॉज यहाँ पे हेल्पर में से लाइट मौजूद है। गॉट इट? यस और नो? प्लीज टेल मी सत्या। करेक्ट है? सेम थिंग यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमूव द डबल बॉन्ड एंड राइट द स्ट्रक्चर एज इट इज। करेक्ट? फाइन, yes or no? Have your mic on, please. Yes, sir. Now this is the first carbon, this is the second carbon. First carbon में कितना हाइड्रोजन है? Tell me, how many hydrogen in the first carbon? Two. जोर से बोलें। One, sorry, one. One hydrogen, right? It has one hydrogen. What about the second carbon? How many hydrogens here? None. वन Zero. टू थ्री फोर फाइव, हाँ ऐसे बोलिए प्लीज। हाँ, बिकॉज नन और वन ना एक ही सुनाई देता है। ठीक है, जीरो हाइड्रोजन। सो द बी आर विल बी अटैच्ड ऑन विच कार्बन? फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन? First carbon. आपने किस में अटैच किया है? Second. Hmm. ठीक है, अब यहाँ पे कृष्ण प्रिया आप भी बताइए, व्हाट इज दिस रिएक्शन? ये तो यहाँ पे तो Br2 है ना, हाइड्रोजन हैलाइड तो है नहीं। Oh, yeah. Hmm. ठीक है सफिया, आपने, मतलब आपका दिमाग ठीक डायरेक्शन में गया, बट यू डिड नॉट राइट द प्रोडक्ट करेक्टली। इज बिकॉज व्हेन द Br2 इज प्रेजेंट, दिस इज फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। सो द एल्कीन, एल्कीन में कुछ नहीं होगा, यू विल मेक द प्रोडक्ट एज इट इज। एंड है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज द रिएक्शन इज हैपनिंग ऑन द एल्केन साइड ऑफ द कार्बन्स, and you will be attaching Br on this particular carbon atom because this is a allyl carbon. याद आया? I think we have done the same question. हाँ या ना? Yes, sir. किया ना हमने, सेम सवाल किया हुआ। ठीक है, तो हम उसी टाइम से बोलते आ रहे थे कि ये कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, करेगा, है ना। एंड एज यू कैन सी, इट डिड, क्योंकि बीच में हमने डाल दिया Br2 को। कृष्ण प्रिया तो बिल्कुल ऐसा गूगली मिल गया कृष्ण प्रिया को। चलिए, आफ्टर दिस, अब यहाँ पे भी आपको वही करना था ना, यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हाइड्रोजन हैलाइड पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव, है ना। हाइड्रोजन हैलाइड पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकोव, एंड द Br विल अटैच ऑन विच कार्बन? बताइए, वन और टू? सफिया, फर्स्ट और Of सेकंड कार्बन? two. A वेरी second गुड, carbon. यस यस, वेरी गुड। You see the mistake you have done in writing the structure, yes or no, Sophia? Yes, sir. Correct कीजिए।
सफिया, लेट मी नो व्हेन यू डन। कृष्णा प्रिया, आप भी ठीक करके बताइए यू आर डन राइटिंग। ओके सफिया डन, कृष्णा प्रिया आल्सो डन, फाइन। नाउ एल्कीन्स वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है। अच्छा, एक ना देखिए, एक सवाल है आपके एनसीईआरटी में, लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन, देन वी विल मूव ऑन टू अदर पार्ट्स। क्लास 12th। Please write this question. Write this question, okay? A hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark. Does not react with chlorine in monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. Both of you guys, Krishna Priya and Safia, can you please have your cameras on? Thank you. See here, guys. See here, see here. Again. First of all, you will have to identify what class of compound is C5H10. क्या ये alkane है, alkene है, या फिर कुछ और है? Tell me, guys. Krishna Priya and Safia. What Sir, is it? alkene. Alkene. Okay. Fine. But C5H10 plus Cl2 without the presence of any sunlight or something, it is not giving you any product, right? But अगर आप alkene को react कर रहे हैं, if you have C double bond C and it reacts with Cl2, तो आपको क्या मिलता है? You have carbon with chlorine and another carbon with chlorine, correct? Yes, है sir. ना? So what we can say, C5H10 से आपको लग तो ऐसा रहा है कि that it is alkene, but it is written in the next line that it does not react with chlorine in dark, but alkene तो करता है react. In the absence of light also, alkene can react with chlorine, right? Cl2, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है. From alkenes, देखिए, we have alkene and any halogen, तो bromine कुछ भी हो जाए, ठीक है? So it reacts. We have seen that. That means we can say that C5H10 is not an alkene. तो क्या होगा फिर? If it is not alkene, oh, wait a second. Cycloalkane. It will be then cycloalkene. Fine. Because cycloalkane भी same चीज होता है, that is CnH2n. देखिए, सुनिए, ध्यान सुनिए. C5H10 can either be alkene
और साइक्लोएल्कीन, ठीक है। एंड यू राइट सिंस it does not react, it does not react with Cl2 in dark, it cannot be an alkene. ये alkene हो ही नहीं सकता है, fine, it cannot be an alkene. Therefore C5H10 is cycloalkene. Cycloalkene भी ऐसा जिसमें all the 5 carbons are like this. Okay, cycloalkene. ठीक है, even if you have 4 carbon atoms and then CH3, इसको भी अगर आप काउंट करेंगे ना, then this is also C5H10. तो साइक्लोएल्केन में भी कौन सा होगा, वो कैसे पता चलेगा? You will write then it is a cycloalkene. Now you will write, and since it gives only one monochloro product on chlorination in sunlight, C5H10 is cyclopentane. ठीक है, बिकॉज साइक्लोपेंटेन ही ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है विद द फॉर्मूला C5H10 in which all the carbon atoms are same. इसमें अगर आपने Cl2 दिया and then you have sunlight, then you will get only one monochloro product like this. All right, so raise your hand once you are done. Sophia is done. Krishna, we are waiting for you now. Okay. All right, next. Now we are going to look at some miscellaneous methods of preparation. Right? Miscellaneous method of preparation of haloalkane and haloarene. ठीक है, MOP कर दीजिए सर. In this, the number one that we are going to look at is a name reaction that is important, Sandmeyer's reaction. What happens? Sandmeyer's reaction. Please write. सबसे पहले तो समझिए सैंडमेयर रिएक्शन भी यूज किस लिए किया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ it is used for the preparation of haloarenes. ठीक है, haloarenes के preparation के लिए इसमें यूज किया जाता है. So what is the Sandmeyer reaction? In Sandmeyer reaction, what happens? You have a compound known as benzene diazonium salt. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में बेंजीन डाइazonium का मतलब होता है N2 positive. N2 positive and salt, and it is basically with some X negative. Generally यहाँ पे ये Cl negative होता है. ठीक है, this is known as benzene diazonium chloride. क्या होता है ये? Benzene diazonium chloride. Now, when this is treated with, दो चीजों से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड, Cu2 Cl2 और Cu2 Br2. ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, then you will get chlorobenzene and bromobenzene, Cl and Br. ठीक है, then write this with me.
when benzene diazonium salt is treated with cuprous chloride or cuprous bromide, it leads to the formation of fluoro or bromobenzene. Now there are some remarks regarding this. ज़्यादा ही thick हो गया, I don't know why. Right? See, the benzene diazonium chloride is very unstable. At room temperature. ठीक है, अब ये बताइए सफियान कृष्णा प्रिया, कैन वी स्टोर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन लैब में ऐसे रख सकते हैं बना के? बताइए। No. No. नहीं ना, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, तो रूम टेम्परेचर पे क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, राइट? तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा? हाउ आर वी गोइंग टू यूज इट? वी आर गोइंग टू यूज इट बाय व्हाट? बाय कैसे यूज करेंगे इसको? इसको यूज करेंगे, वी विल मेक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन सीटू. इन सीटू का मतलब होता है इन अ प्रोसेस ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, सो यू राइट देयरफॉर it is prepared in situ for Sandmeyer reaction. ना ऐसा Sandmeyer reaction by treating aniline with sodium nitrite and HCl. ठीक है, sodium nitrite and HCl. So what do we have? We have aniline. Aniline is benzene ring with a NH2 group. This reacts with NaNO2 plus HCl at very low temperature, 0 to 5 degrees Celsius, and it leads to formation of the benzene diazonium chloride. You will get N2 positive, Cl negative. Then you can react this with cuprous, Cu2X2. Here X will be equal to chlorine or bromine, and you will be getting a haloarene. X plus N2 will be released. Okay. So when they ask you for the Sandmeyer reaction, you can write this whole reaction. ठीक है, पूरे रिएक्शन लिख लीजिए, तो कोई भी मार्क्स कटने की वहां पे आपको कोई चांसेस नहीं मिलेंगे. Take next point. Heating BDC, यानी कि benzene diazonium chloride with potassium iodide forms iodoalkane. Oh, my bad. Iodobenzene. Forms iodobenzene. But this is not Sandmeyer reaction. ये Sandmeyer reaction नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. Sandmeyer reaction में इसको लेके चले आते हैं, ठीक है. MCQ में आ जाए ना कि which of the following is not Sandmeyer reaction या फिर which of the following is Sandmeyer reaction. Please इसमें identify कीजिएगा. This one, N2 positive. Here we are using the same benzene diazonium chloride, but here we are using what? Ki in the presence of a bit of heat. You can even warm it, and you will get benzene iodobenzene. ठीक है, but this is not Sandmeyer reaction. Please write this down. Raise your hand once you're done.
Okay, thank you. Right, next. Halogen exchange methods. Okay, so this is miscellaneous MOP में ही after standard reaction we have halogen exchange methods. In halogen exchange method, the first is known as Finkelstein reaction. Again, this is also a name reaction, है ना? क्या है? Finkelstein. So in Finkelstein reaction, what happens? You have any haloalkane Rx. You treat this with sodium iodide in the presence of dry acetone. अच्छा बताइए, ड्राई एसीटोन will it be solid, liquid और gas? क्या होगा? Solid होगा, liquid होगा, gas होगा? Solid. It will be solid. What about you, Safia? क्या होगा? Solid, liquid और gas? Dry acetone. No idea. No idea. ठीक है, एसीटोन जो होता है ना वो लिक्विड ही होता है. ठीक है, एसीटोन इज लिक्विड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? ड्राई का मीनिंग होता है दैट इट इज नॉट हैविंग एनी वाटर इन इट. ठीक है, सिर्फ पानी होता नहीं. आई मीन ड्राई का मतलब क्या 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 करना हुआ केमिस्ट्री के अंदर? व्हेनेवर यू सी ड्राई, इट डज नॉट मीन इट इज सॉलिड वगैरह. लिक्विड और सॉलिड फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है. ड्राई का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर. मेक सेंस सफिया एंड कृष्णप्रिया? ठीक है, आप बताइए प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको? सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट किया तो R and will be attached with what? I. Very good. Plus you will get NaX. Okay. So the halogen that you can use here is chlorine or bromine. So what happens in Finkelstein reaction? Chlorine or bromine is replaced by iodine. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है फिनकेल्स्टीन का भाई स्वार्ट्स रिएक्शन. So in Swartz reaction, what do we have? Swartz reaction में आपके पास we have Rx, that is again here also X is either chlorine or bromine. It reacts with any metal fluoride and it gives you a fluoroalkene with MX. ठीक है. So what can be the metal fluoride? Metal fluoride में बहुत आसान आप याद कीजिए silver fluoride. ठीक है. Or you can also remember mercuric fluoride, Hg2F2. SbF5 एंटीमनी फ्लोराइड भी होता है, उतना ज्यादा नहीं. अब HgF, Hg2F याद कीजिए. Whenever you see metal fluoride ना, कोई भी metal fluoride मिल जाए आपको in the reaction and there is chloroalkene, bromoalkene, तो फिर आप उसका fluoroalkene बना देंगे. Here what happens? Cl or Br is replaced by chlorine. ठीक है. So okay, is done. Write some remarks. Now this remarks is basically for all the, बेसिकली ये ना हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में ही लिखा रहे हैं
कि ये एग्जैक्टली व्हाई वी हैव टू डू आयोडीनेशन, मतलब फ्लोरिनेशन के लिए ऐसा अलग से रिएक्शन क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन एंड देन उसको कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली? कभी भी हम लोगों ने उतना देखा नहीं दैट वी आर गेटिंग फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन। दैट इज बिकॉज, प्लीज राइट, फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ F2. Reaction with F2 is not done as it is highly reactive and the reaction gets violent and cannot be controlled. सेकेंड पॉइंट, आयोडिनेशन क्यों होता है? तो उसका उल्टा है, आयोडिनेशन is very slow and iodination is not done, कर लीजिए पहले, is not done as I2 is very unreactive and reaction is slow. Please write this down. ठीक है, so this is the end of method of preparation of haloalkane halorine. ठीक है, इतना ही था आपका haloalkane halorine मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बच रही हैं। अब प्लीज सी व्हाट यू नीड टू डू नाउ, बिल्कुल इमीडिएटली आपको करना पड़ेगा। वी हैव कंप्लीटेड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है? लेट मी रिवाइज फॉर यू गाइस। वी हैव सीन फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल से। सो इन अल्कोहल वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले है आपके पास फॉस्फोरस बेस्ड रिएजेंट, ठीक है। देन वी हैव SOCl2। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना? इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ प्रिफर्ड मेथड, स्टार मेथड, बहुत बढ़िया होता है। वाई? देर इज अ क्वेश्चन हियर। देन यहाँ पे आपके पास है NaBr प्लस H2SO4। इससे पहले बताइए, यू हैव HX, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है लुकास रिएजेंट, इसको ध्यान में रखना है आपने। देन आफ्टर दैट वी हैव NaBr प्लस H2SO4। ये तो हो जाता है, लेकिन फिर Ki और H2SO4 या फिर सोडियम आयोडाइड एंड H2SO4 ये नहीं होता है। Why does this not happen? इसके लिए we have to use some mild oxidizing agent, H3PO3, H3PO4 यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद अगर हम बात करें, देन वी सॉ alkenes, alkene, alkene में we saw only one method, that is free radical halogenation। यहाँ पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, दी आइसोमर्स दैट कैन बी फॉर्म, अलग अलग जो आइसोमर बनेंगे उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास एल्कीन। तो एल्कीन में आपके पास तीन रिएक्शंस है। एक तो है सीधा Cl2X2 के साथ, X2 इन डार्क, मतलब कोई यहाँ पे लाइट वाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यू गेट विसिनल डाइहलाइड्स। देन यू हैव दी हैलोजन हैलाइड्स। इसमें आपके पास दो हैं, देर इज अ मार्कोनिकॉव एडिशन एंड देर इज अ एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव द मिसलेनियस। मिसलेनियस में एक चीज जो आपको पुट करनी है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
benzene ring wala. Then you have the Sandmeyer reaction. Then you have the halogen exchange method, जहां पे आपके पास फिनकेल्स्टीन है एंड स्वार्ट्स है. फिनकेल्स्टीन और स्वार्ट्स. स्वार्ट्स में क्या मिलेगा आपको? F मिलेगा. और फिनकेल्स्टीन यानी F में आपको क्या मिलेगा? मतलब हैलोजन से यू विल गेट फ्लोरीन एंड क्लोरो और ब्रोमो से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आयोडीन मिल जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द क्रक्स. यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू टेक अ शीट और वहां पे आपको इस तरह से स्टार्ट करना होगा. लाइक यू हैव ROH, इसके अलग अलग आपने इस तरह से वेब डायग्राम बना लिए. दैट दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है. अल्कोहल से. ठीक है. उसी तरह एल्कीन से यू हैव लेट्स सपोज प्रोपीन ले लिया आपने, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन. उसके बाद आपने अलग अलग इसके लिए रिएक्शंस लिख दिए एल्कीन के लिए भी. सो यू हैव टू condense all the method of preparation in one page. one sheet की नहीं बात कर रहे हैं. in one page you try to condense all the information. even मतलब जो कुछ भी रिएक्शन हो रही है ना वो आपके पास एक शीट में होना चाहिए. and then you will make one more page. इस पेज में आप हैलोअल्केन हैलोरीन का Y वाला सवाल लिखिएगा. Y hydrogen chloride is preferred for the preparation of haloalkane. Why free radical halogenation is not a preferred method for the preparation of haloalkane. Why the alkane should be taken in excess when we want to get a mono halogenated product. है ना? याद आ रहा है? Why H2SO4 is not used when potassium iodide is reacted with H2SO4 and alcohol. याद आ रहा है कृष्ण प्रिया एंड सफिया? yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. वाई मार्कोनिकोव में ऐसा मिलता है आपको, एंटी मार्कोनिकोव में ऐसा मिलता है, तो कार्बोकैटायन एंड देन कार्बन फ्री रेडिकल वाला. सो ऑल दी वाई क्वेश्चन शुड बी देयर. मतलब अभी तो हमने कुछ वाई सवाल देखे ना, वी हैव सीन ओनली सम वाई क्वेश्चंस. ठीक है. तो उस तरह से आपके पास 1 2 3 4 बहुत सारे ऐसे वाई क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको मिलेंगे. सो यू हैव टू लिस्ट ऑल दी वाई ओनली क्वेश्चंस. वाई आंसर आपका दिमाग में रहना चाहिए. अभी आंसर के लिए सी दीज पेजेस यू कैन कंप्लीट. पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसको पढ़ने का बस यही तरीका है. इसके अलावा आई डोंट नो एनी वे. बाद में बैठ के आप रटते रहिए, वो बात अलग है. लेकिन अगर आपको इफेक्टिवली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो व्हाट यू शुड हैव, आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? यू हैव हैलोअल्केन हैलोरीन, अल्कोहल वाला चैप्टर. यू हैव एल्डिहाइड कीटोन्स एंड देन यू हैव अमीन्स. So there are 4 chapters. So for this 4 chapters, haloalkane halorine में see method of preparation. For method of preparation, you will take 1 page for haloalkane halorine. Alcohol, phenol, ether में there will be 1 page. In aldehyde ketone, you would be requiring 2 page for the method of preparation. In amines, you will be requiring only 1 page. So method of preparation में आपके लिए कितने pages हो गए? You have 5 pages, right? Then comes chemical reactions. So for haloalkane halorine, एक ही पेज के अंदर आपको calculation, all the chemical reaction should be there. Alcohol के लिए you would require 1 page. Aldehyde में you will require 2 page. Amines में you will require only 1 page. So यहाँ पे भी आपके पास you have 5 pages. Okay. Then comes the why questions. So all of these will require only 1 page. जिसमें सिर्फ आप क्या लिखेंगे? सवाल लिखेंगे. Questions you will write. So this is now 4 pages. Then there will be 1 page, only 1 page for all of these chapters. That will contain the names. नेम रिएक्शन यानी कि एक ही पेज होगा. इन 1 पेज ओनली यू विल मेक सेक्शन. सबसे पहले यू विल राइट हैलोअल्केन एंड हैलोरीन. नंबर 1 नेम रिएक्शन वी सॉ इज सैंडमेयर रिएक्शन. यू विल राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन ओनली, सैंडमेयर रिएक्शन, और ब्रैकेट में कर दीजिए MOP. दैट मींस इफ यू हैव सैंडमेयर रिएक्शन, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, देन यू विल गो एंड लुक एट द MOP पेज. समझ रही है सफिया एंड कृष्ण प्रिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So Sandmeyer reaction, then you will write Finkelstein reaction, then you will write है ना Schwarz reaction. So all of these will be in what MOP. अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है फिर आप क्या देखिएगा जाके मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले में देखिएगा. यू विल सी दैट ओके दिस इज Finkelstein reaction. So for name reaction ये हैलोअल्केन हैलोरीन का हो गया. ऐसे ना मिड में यू विल ऐसे बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर दीजिएगा ना, मिड ऑफ द पेज एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि यू जस्ट नीड टू राइट द नेम्स. वहां पे रिएक्शन लिखना ही नहीं है. दीज पेजेस आर फॉर द रिविजन. दैट आपको सारे केमिकल ऑल दी नेम रिएक्शन आपको अगर याद मतलब ध्यान देना है कि कौन कौन से. एक पेज के अंदर आपके पास सारे नेम रिएक्शन लिखे हुए हैं, आपको बस दिमाग में लाना है कि कहा मतलब कौन सा रिएक्शन. और द गुड पार्ट इज दैट अगर आपको यहाँ पे MOP बोला हुआ है ना, सो यू नो दैट द प्रोडक्ट इज आइदर गोइंग टू बी हैलोअल्केन और इट इज गोइंग टू बी हैलोअरीन.
और समझ में आ रही है? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द नेम रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। बिकॉज अगर चैप्टर के अंदर है तो आपको पता है कि हैलोअल्कीन हैलोजीन या तो रिएक्टेंट में होगा या तो प्रोडक्ट में होगा। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, है sir. ना? ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर लर्निंग द नेम रिएक्शन यू लर्न इट। वो ना आप ऑर्गेनाइज कीजिए अपने नॉलेज को। द मोर यू प्ले विद द नॉलेज, मतलब जिस तरह जितना आप ज्यादा ऑर्गेनाइज कीजिएगा अपने नॉलेज को ना, उतना ही ज्यादा आपको याद रहे। यू बिल्ड, देखिए आपका ये फोर ब्रेन है, ठीक है, एंड दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां पे आपके पास नॉलेज स्टोर्ड है। ईच एंड एवरीथिंग दैट, देखिए आप लोगों को अभी डिमेंशिया तो हो नहीं रहा है होपफुली, कि आपके ब्रेन सेल्स ही मर जा रहे हैं। सो ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आप पढ़ते हैं ना, दैट इज प्रेजेंट, एंड इफ यू हैव प्रोसेस इट फॉर अ व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो दिक्कत होती है और जो एग्जाम में आपको करना रहता है ना, एग्जाम में ये प्रोसेस हो रहा होता है। फर्स्ट वाला बताइए, दिस इज योर, तो क्या होता है फोर ब्रेन में होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी, है ना। दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो काम आता है आपका अभी, लाइक राइट नाउ वट एवर यूर वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग ना, उसमें काम आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एंड देन यू हैव द बाकी आपका मतलब अलग अलग पार्ट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ये एक प्रोसेस है कि आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में यू are playing with some kind of information, you're processing it and you are remembering it and you're storing it in the long term memory. और दूसरा प्रोसेस क्या है, from the long term memory you have to fetch a particular information and bring into the prefrontal cortex और फिर आपको उसके बारे में कुछ बताना होता है। तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फर्स्ट या सेकंड बताइए? क्या होता है एग्जाम के दौरान, फर्स्ट वाला प्रोसेस हो रहा होता है, सेकंड वाला हो रहा होता है? Second. सेकंड हो रहा था ना, क्रिस्टल क्लियर, राइट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना सफिया? इस सेकंड वाला प्रोसेस इज, तो बताइए आपको ज्यादा तैयारी ज्यादा प्रैक्टिस कौन से प्रोसेस की करनी चाहिए, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? लोग बच्चे जो मरे पड़े रहते हैं ना, वो फर्स्ट प्रोसेस से मरे मरे पड़े रहते हैं, याद करना याद करना याद कर रहे हैं। ये सारी चीजें अभी याद हो रही हैं, ठीक है ना, ये याद हो रही है, याद हो रही है, याद हो रही है। और ये वाला प्रोसेस एक बार भी आपने नहीं किया है, यू हैव नेवर ट्राइड टू रिटेन वॉट एवर यू हैव ट्राइड टू मेमोराइज या यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने सेकंड प्रोसेस कभी किया ही नहीं है, तो ब्रेन को तो दिक्कत होगी ना यहां से इंफॉर्मेशन को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लाने के लिए, है ना कृष्ण प्रिया सफिया, राइट? Yes, अगर sir. ये पाथ ऑलरेडी आपने बना के रखा हो, ये पाथ ऑलरेडी बना के रखा हो, आपने ऐसे देखा है ना कि जंगलों के अंदर, द फॉरेस्ट, देर आर, मतलब कुछ रास्ते ऐसे होते हैं ना जो बहुत बार चलते चलते ऐसे मार्क हो जाता है, यहाँ पे घास वास फिर नहीं उगती है, राइट? सो योर ब्रेन इज ऑल्सो लाइक दैट। इफ यू आर, मतलब बहुत बार अगर आप किसी एक पाथ को यूज करेंगे ना टू फेच द इंफॉर्मेशन, देन दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन्स विल बी स्ट्रेंथेंड, फिजिकली स्ट्रेंथेंड। वो वायरिंग आपकी जो, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि, मतलब हाइपोथेटिकल हम बात कर रहे हैं, दोज न्यूरॉन्स विच आर यूज्ड कॉन्सिस्टेंटली, जैसे आपका नाम है, आप भूलिएगा कभी सफियान कृष्ण प्रिया, ऐसा हुआ कि आपने नाम भूल गया? वही नहीं, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच फेचेस दी what which fetches your name from the long term memory, it is what, it is very strengthened, क्योंकि आपने इतनी बार इस्तेमाल किया उस चीज को, दैट इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। ओके, दैट इज वाई जितनी बार, प्लीज अब यहाँ पे ना हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट और ये सेकंड है। अब आपके पास जब वेन एवर यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज नॉलेज ना, ये सेकंड वाला प्रोसेस हो रहा होता है ऐसे, इट कम्स इन सर्कल। आपने अपना नोट्स देखा, आपने उस चीज को प्रोसेस किया और फिर यहाँ पे लिखा, सो नोट्स देख के आपने प्रोसेस करके फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, सो दिस सर्कल गेट्स री इम्प्लीमेंटेड मेनी अ टाइम्स व्हेन यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ठीक है? और फिर उसी तरह ना आप जब इस केमिकल नेम्ड रिएक्शन को आप जब रीड करेंगे, देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन दिस सेकंड प्रोसेस जो आपको एग्जाम में भी करना है, दैट सैंडमेयर रिएक्शन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है? एक तो आपके पास ये हो गया वन पेज, दिस इज वन पेज, ठीक है? देन वाई के लिए तो आपके पास हर एक चैप्टर के लिए वन पेज था, तो दैट इज फोर पेज। नाउ दिस नेम रिएक्शन में यू विल हैव वन पेज, देन कम्स दी टेस्ट्स। टेस्ट क्या? केमिकल टेस्ट। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए कौन सा टेस्ट होता है ना? सो उस टेस्ट के लिए यू विल हैव वन पेज।
तो टोटल यू कैन सी 5 5 10 और 15 और एक 16, सो 16 to 20 पेजेस हम बोल रहे हैं, पेजेस नॉट शीट्स, पेजेस. ओके, सो दैट विल बी 10 शीट्स. 10 शीट होंगे आपके पास. देयर विल बी 10 शीट्स इन विच द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड बी प्रेजेंट. और अगर आपने ये 10 शीट्स बना लिए खुद से, ऐसे इंटरनेट से नहीं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ऐसा शॉर्ट नोट्स, वहां से नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन दीज. ओके, सफियान कृष्ण प्रिया, और यही आपका क्या है, यही आपकी प्रिपरेशन हो रही है. इफ यू आर गोइंग टू, जितने भी लास्ट ईयर जितने ही बच्चों ने इस पे मेहनत की थी ना, ऑल ऑफ देम गॉट 90+ इन केमिस्ट्री. हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बनाने से 90+, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ कोरिलेशन. जितने भी बच्चों ने, हम ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने नहीं बनाया उनका 90+ आया ही नहीं है, वो भी नहीं कह रहे, बट जितनों ने बनाया उनका 90+ आया ही. देयर वर सम पीपल हु डिड नॉट मेक दिस होल थिंग बट स्टिल दे गॉट 90+. बट लेकिन जितने मतलब जो भी जिसने भी बनाया ना, उसका 90+ तो आया ही. बाकी लोगों का तो आया ही, लेकिन जो भी बनाया था, ऐसा किसी का नहीं हुआ कि ये जो आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा वर्क है, ये कभी भी इट विल नॉट गो इन वेस्ट. ठीक है, सो यू विल स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, एक चीज तो आप लोग स्टार्ट कर लीजिए कम से कम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. नाउ जरूर होगा कि